Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is capital structure and leverage. Uh, this will be our eighth topic that we'll be covering in this course. So let's start with the uh, lecture. So basically, the concept of capital structure is that whenever business is launched, there are two sources for financing. One is the equity, and the other is the debt. So in capital structure, basically, we decide that what portion of our total capital will be coming from the equity and what portion will be coming by means of loan or debt. So whenever a business is launched, a target capital structure is set by the company. What is target capital structure? It is the mix of debt, preferred stock, and common equity with which firm plans to raise capital. Now, debt is loan, preferred stock, it is a hybrid security. It has certain characteristics of debt and certain characteristics of stock, and common equity is your common shares. So these basically are both the type of shares. One is preferred stock and the other is common stock. So this is the when the company is or business is launched, target is set that this proportion of the total capital will be coming by means of debt, and certain portion will be coming by means of preferred stock, and the remaining portion will be finance or it will be acquired by selling the shares in the stock market. Now, if actual debt ratio, whatever was your target capital structure, if you're in that, you set a certain portion for the debt, if that debt ratio is less than target level, then the company is in a position to issue more debt. ठीक है उन्होंने जो let's say कंपनी ने जो है वो टारगेट सेट किया था 50% डेट का. अब एक्चुअल उनका जो डेट है वो द टारगेट वाज 50%, लेकिन एक्चुअल डेट लेट्स से इज 45%. So still they have a cushion to get or to issue 5% more debt. On the other hand, if the actual debt is greater than the target level, ठीक है कि टारगेट जो था वो 50% था, एक्चुअल डेट 55% है, तो अब they cannot go for debt, rather they will issue more shares. Capital structure policy involves a trade-off between risk and return. Okay, now this is a decision in which we are looking at our return. Okay, we want to invest more in our business, but at the same time, if it is coming by means of debt, then it is increasing the risk as well. So this more debt means more risk borne by shareholders. However, more debt leads to a higher expected rate of return on equity. ठीक है, तो जाहिर है जब आप ज़्यादा लोन लेंगे तो रिस्क बढ़ेगा, और रिस्क किसका बढ़ रहा है? वो शेयर होल्डर्स का बढ़ रहा है. ठीक है, तो इसलिए जब शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ रहा है तो दे एक्सपेक्ट कि उनको रिटर्न भी उस पर ज़्यादा मिलना चाहिए. सो मोर डेट ऑलवेज लीड्स टू अ हायर एक्सपेक्टेड rate of return on equity. Okay, now moving on to the next slide is we have different capital structure decisions. The company wants to achieve an optimal capital structure. What is an optimal capital structure? It is a balance where the company has achieved a balance between risk and return in a way that the stock price of the company is maximized. ठीक है, तो one of the criteria to decide whether the company has achieved optimal capital structure or not is to see whether the stock price is maximum. ठीक है, यानी अगर आप over the period of time अपने stock price को monitor कर रहे हैं, तो जिस लेवल पे आपकी स्टॉक प्राइस जो है वो मैक्सिमम थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, दैट इज द पॉइंट. उस पॉइंट पे जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर था वो आपका ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा. Now, four primary factors that influence capital structure decisions include: number one is business risk. Business risk is inherent risk in the firm's operation. Some of the businesses fall in the category where the risk is high, and there are certain businesses in which नेचुरली द रिस्क इज लो. जैसे कि स्टील और ऑटोमोबाइल दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हाई रिस्क इंडस्ट्रीज हैं. जब
इकोनॉमी बूम पे होती है तो कंस्ट्रक्शन भी बूम पे होगी, तो आपकी स्टील की डिमांड बढ़ जाती है। लोगों के पास पैसा है तो आपकी ऑटोमोबाइल मोबाइल्स की डिमांड बढ़ जाती है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज लो, तो फिर इसके वाइस वर्सा होता है कि भाई लोगों के पास पैसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी, एंड परचेजिंग पावर नहीं है तो ऑटोमोबाइल्स की डिमांड कम हो जाएगी। सो दीज बिजनेसेस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ हाई बिजनेस रिस्क। ऑन द अदर हैंड ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, हेल्थ रिलेटेड आइटम्स हो गए, तो दीज आर जनरली कंसिडर्ड टू बी लो रिस्क, कि इनके अंदर डिमांड्स के अंदर इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती हैं। इकोनॉमी जो है वो बूम पे हो या रिसेशन पे हो, इधर वे दीज आर नेसेसिटीज, तो ये तो लोगों ने इस पे पैसा खर्च करना ही करना है, इसलिए इन बिजनेसेस के अंदर जो है रिस्क फैक्टर जो है वो लो होता है। सो वन ऑफ द फैक्टर दैट that influence your capital structure is this inherent risk that you have in the business. वो businesses जिनमें inherent risk high है, they cannot rely very high on the debt, ठीक है, इसलिए वो they tend to be relying more on the equity part। और वो businesses जिनके अंदर जो है inherent risk जो है वो low है, स्टेबल डिमांड उनके प्रोडक्ट्स की, तो वो ज्यादा डेट अफोर्ड कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। दूसरा फैक्टर है the firm's tax position. A major reason for using debt is that interest is tax deductible. If a firm's income is sheltered from tax by depreciation tax shields, interest on already outstanding debt, or by tax loss carry forward, additional debt will be as advantageous as it would be for a firm with higher tax rate. Okay, so one of the motivation behind using debt is it is tax deductible। ठीक है, जो आप लोन लेते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो आपके इनकम स्टेटमेंट में से कम हो जाता है, तो नेचुरली आपका टैक्स भी उसकी वजह से कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये एडवांटेज नहीं मिल रहा, उसकी रीजन ये हो सकती है कि जी आप ऑलरेडी आपका जो है वो यू आर गेटिंग टैक्स रिबेट ड्यू टू माइट योर फर्म माइट बी ऑपरेटिंग इन अ नो टैक्स जोन, जैसे कि गवर्नमेंट्स जो है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सर्टेन एरियाज के अंदर जो है वो नो टैक्स जोन्स स्टैब्लिश कर देते हैं, टैक्स फ्री आपको इंसेंटिव्स दे देते हैं, तो वो उन ऐसे बिजनेसेस के लिए फिर ये मोटिवेशन फैक्टर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता होगा। इसी तरह से इनकम टैक्स के अंदर देयर इज अ प्रोविजन कि अगर आपको लॉस हो गया एंड देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट लॉस फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, तो फिर उस सूरत में भी ये फैक्टर आपको इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं करेगा फॉर यूजिंग डेट। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये फैक्टर्स नहीं है, तो जो जनरल उसकी जो इफेक्ट है ऑफ डेट इज दैट इट लोअर्स योर टैक्स इनकम टैक्स एज वेल। तो टैक्स की जो यानी ऑन वन हैंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट बट ऑन द अदर हैंड योर टैक्स इज रिड्यूस, तो इसलिए बिजनेसेस को वो इतना that is one factor that motivates the businesses to go for tax. The third factor is financial flexibility. It is the ability to raise capital on reasonable terms under adverse conditions. Suppliers of capital prefer to provide funds to companies with strong balance sheets. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। वंस यू अप्लाई फॉर अ लोन तो आपकी जो है वो निगोशिएशन चलती है विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ you are bargaining with that financial institution if you have a very strong balance sheet। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट से क्या मुराद है कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो काफी बड़े पोर्शन के अंदर हैं, और आपकी जो है वो फिक्स्ड एसेट्स हैं दैट इंक्लूड योर लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी, ऐसे जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो स्ट्रांग है, या दे कवर मेजर पोर्शन ऑफ योर एसेट्स, तो इट मीन्स यू हैव अ स्ट्रांग बैलेंस शीट। तो उस स्ट्रांग बैलेंस शीट की बेस पे यू हैव अ better bargaining position, you are in a better bargaining position when negotiating with the financial institutions। तो फिर आप अच्छे टर्म्स पे लोन ले सकते हैं, लो इंटरेस्ट रेट पे you are in a position to get the loan। So if you have this financial flexibility, means you have a very strong balance sheet, then you can negotiate with the supplier of credit, with the financial institutions which are providing the credit, and you can get the loan on favorable terms and conditions। तो ये भी इसमें एक फैक्टर है जो कि आपको कंसिडर करना है while deciding your capital structure। The fourth is managerial conservatism or aggressiveness। Aggressive managers are more inclined to use debt in an effort to boost profit। अच्छा, now if you look at the type of managers you have, generally they can be
दे आर डिवाइडेड इनटू दीज टू कैटेगरीज कि जी एक जो आपके मैनेजर्स हैं वो कंजर्वेटिव हैं. कंजर्वेटिव का मतलब है कि दे डोंट दे डोंट टेक टू मच रिस्क. ठीक है, तो अगर वो इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं तो फिर नेचुरली दे विल नॉट बी लुकिंग एट वेरी हाई लेवल ऑफ डेट. यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में उनको डेट का पोर्शन जो है ना, दे विल नॉट कीप वेरी हाई इफ द मैनेजर्स आर कंजर्वेटिव. ऑन द अदर हैंड, इफ द मैनेजर्स आर एग्रेसिव, जो कि जनरली अगर आपकी मैनेजमेंट में यंग लोग हैं तो वो रिस्क टेकर्स होते हैं. और जब जो वो इस मेंटेलिटी के साथ चल रहे हैं, दे डोंट फेयर टेकिंग रिस्क, तो फिर वो उसमें डेट के पोर्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो वो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ऐसे फर्म्स का जिसमें कि मैनेजर्स एग्रेसिव हैं, उनके अंदर आपको डेट का पोर्शन जो है वो हाई नजर आता है. सो here we discuss the four factors that can influence your capital structure: business risk, the firm's tax position, financial flexibility, and the style of managers you have or the type of managers you have. All of these, they affect your capital structure. कि स्पेसिफिकली स्पीकिंग कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का क्या पोर्शन होगा और इक्विटी का क्या कंट्रीब्यूशन होगा. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क? ये अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बिजनेस रिस्क का थोड़ा सा एग्जांपल दी थी कि बिजनेस रिस्क इज इनहेरेंट इन रिस्क. दैट इज रिस्क रिलेटेड टू द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग. So it means even if you don't take any loan, still that risk that is there, that exists there in your business, it is called business risk. तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि business risk is the risk of the firm when it is using no debt. So whatever risk the business is carrying at zero debt level is called business risk. Financial risk, additional risk placed on common stockholders as a result of the firm's decision to use debt. ठीक है, तो फाइनेंशियल रिस्क तब आता है जब आप लोन लेते हैं, जब आप बोरो करते हैं, तो वो जो आपने लोन लिया या बोरो किया उसकी वजह से जो आपको रिस्क बेयर करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क. Again, business risk, talking about business risk is in a standalone sense is a function of the uncertainty inherent in projection of firms' return on invested capital. Now, return on invested capital it can be calculated by dividing the net operating profit after taxes, which is your operating income, divided by capital. So, net operating profit after taxes is what? It is net income plus after tax interest payments. And divided by capital is return on invested capital. So, this return on invested capital is basically your business risk. If the firm uses no debt, then its interest payments will be zero. ठीक है, क्योंकि ये जो आप आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप तो लोन है ही नहीं है, तो आपके जीरो हो जाएंगे. Its capital will be all equity and its return on invested capital will equal its return on equity. So those firms which are not using any debt, means those firms which have zero debt, for them this return on invested capital will be equal to return on equity. And remember, return on equity is net income divided by common equity. So firms with zero debt has for the firm with zero debt, return on invested capital is equal to return on equity. Otherwise, for those firms which are carrying debt, for them return on invested capital is net operating profit after taxes divided by capital. Business risk varies from industry to industry as well as among firms in a given industry. We have already discussed कि जी जो those firms which have high business risk and those firms which have low business risk. So the industries such as autos and steel are considered high risk business risk industries, whereas the uh, food processor and grocery retailers, they are considered low risk businesses. Business risk depend on a number of factors, the more important of which are डिमांड वेरिएबिलिटी. ठीक है, अगर आपका डिमांड आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसके डिमांड जो है उसका the graph of that demand is fluctuating a lot, then it means that business is that then it means that business has a high business risk.
Sales price variability. Again, if you plot your sales and you see a lot of variation there, it means the business risk is high. Input cost variability. Again, if your input cost varies to a great extent, there is greater variation there. So that also indicate a high business risk. Ability to adjust output prices for changes in input costs. So if your product is such that you can easily manipulate your prices depending upon the input cost, and it is not going to affect your demand, then it means you have a low business risk. If you don't have this ability, it means the business risk is high. Ability to develop new products in a timely and cost effective manner. So if you have this ability, the business risk is low. If you don't have this ability, then it means the business risk is high. Ability to risk exposure. Foreign risk exposure is if you're dealing, if your sales are, if the greater portion of your sale is coming from exports, or if it is, if you are generating a greater portion of your income through exports, so and then those exports are with those countries where the, um, it is not certain that what will be their trade policy. It keeps on fluctuating. Then in that case again you are carrying a high business risk. The extent to which costs are fixed means operating leverage. There are certain businesses in which fixed costs are high. तो अगर इस तरह की आपका बिजनेस है जिसमें आपकी फिक्स कॉस्ट हाई है, देन यू हैव अ हाई बिजनेस रिस्क. अगर आपकी फिक्स कॉस्ट लो है, तो इट मींस यू आर कैरिंग अ लो बिजनेस रिस्क. तो अभी हमने फिक्स्ड कॉस्ट की बात की, तो देन द एक्सटेंट टू विच फिक्स्ड कॉस्ट आर यूज्ड इन अ फर्म्स ऑपरेशन, दैट इज बेसिकली ऑपरेटिंग लिवरेज. कि ऑपरेटिंग लिवरेज किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं कि the extent to which you are using fixed costs in your operations. If most costs are fixed, hence do not decline when demand falls, then the firm has high operating leverage. If fixed cost है, demand हो ना हो, still you have to carry that cost. तो उसको हम कहते हैं कि the firm has high operating leverage. Now, what is the effect of operating leverage on your business operations or business profit? More operating leverage leads to more business risk, for then a small sales decline causes a big profit decline. Here you can see an example that the company has a fixed cost. These are the fixed cost. Okay. This straight line is indicating the fixed cost. It means the company has to bear this cost irrespective of the sales. Now, if this company has low fixed cost compared to this company, the bar is higher. Here the bar is lower. So the company's revenues are standing here, and these are the total cost. So now you see, if there is a small decline in sales, means this total cost indicate fixed cost and variable cost. So once your cost increases, if you for generating higher revenue you have to incur more cost. तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी जो है वो प्रॉफिट का चेंज आप देखें. ये जो दिस शेडेड पोर्शन हेयर इज इंडिकेटिंग योर प्रॉफिट. तो यहाँ पे प्रॉफिट आप देखें, आपका यू आर जनरेटिंग दिस पोर्शन ऑफ प्रॉफिट. लेकिन जब आपकी सेल्स डिक्लाइन करेंगी तो आपका प्रॉफिट भी डिक्लाइन कर जाएगा. और अगर आपकी ऑन द अदर हैंड अगर आपकी यानी टोटल कॉस्ट अगर आपकी डिक्रीज करती हैं, टोटल कॉस्ट तभी डिक्लाइन करेंगी जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएंगी, तो आपका पोर्शन जो है प्रॉफिट का पोर्शन इंक्रीज कर जाएगा. ओके, फाइनेंशियल लिवरेज की अभी ने बात कर ली कि फाइनेंशियल लिवरेज इज द यूज ऑफ डेट एंड प्रेफर्ड स्टॉक, एंड फाइनेंशियल रिस्क इज द एडिशनल रिस्क concentrated on common stockholder as a result of financial leverage.
Business risk versus financial risk. Business risk depend on business factors such as competition, product liability and operating leverage, जो अभी हमने पीछे सारे factors discuss कर लिए. Financial risk depend only on the types of securities issued. So if you have more debt, it means you have more financial risk. It concentrates business risk on stockholders since debt holders receive fixed interest payments and bear none of the business risk. So that is some factors, definite distinction between business risk and financial risk. Now, we want to see the effect of financial leverage or effect of debt on the business financial position. For that, we are considering this example of two firms with the same operating leverage, means their fixed costs are the same. Same business risk means they are belong to the same business category, and probability of earning before interest and taxes. So they carry the same probability of EBIT, earning before interest and taxes. So we are considering two firms which have the same, यानी इन चीजों में वो दोनों there is no difference. Operating leverage भी उनका same है, same business risk है और same उनकी probability distribution of EBIT है. Only difference, because since we want to see the different effect of financial leverage, तो हम ये कह रहे हैं इन दोनों में सिर्फ एक ही difference है और वो है financial leverage का या debt का. तो जो फर्म यू है इसको फर्म यू या हम अनलीवर्ड फर्म कह सकते हैं, वो फर्म जिसमें जीरो डेट है. ठीक है, अनलीवर्ड फर्म या फर्म यू. टोटल एसेट्स जो है फर्म के 20,000 है एंड द टैक्स रेट इज 40%. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट फर्म अनलीवर्ड फर्म, फर्म यू. लीवर्ड फर्म एल. ठीक है, लीवर्ड फर्म है जो कि लोन ले रही है, तो उन्होंने $10,000 बोरो किए हैं, उस पर 12% वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. एसेट्स उनके भी 20,000 है और टैक्स रेट उनका भी 40% है. अच्छा जी, अब ये अनलीवरेज फर्म या फर्म यू के लिए हमने ये एक टेबल बनाया जिसके अंदर हम उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बता रहे हैं. ठीक है, so we are considering three scenarios when if in case of bad economy, what is the probability of having economy? Bad economy, what is the probability of having an average economy, and what is the probability of having a good economy? So there is a 25 probability of the economy going bad, 50% probability that economy will be average, and there is a 25% probability that the economy will be good. So this thing, whether the economy is bad, average or good, it is going to affect your earning before interest and taxes. So we are considering here कि जी अगर if economy is bad, the EBIT will be 2,000. If economy is average, EBIT will be 3,000, and if economy is good, the EBIT will be 4,000. This is unleveraged firm. Remember, firm U, so no debt means zero interest. You don't have to pay any interest. So your EBIT and EBT will be the same. 40% tax you have to pay on this EBT. 40% of 2,000 is 800. So 2,000 minus 800 is your net income, which is 1,200. So we have calculated net income for three situations, in case of bad economy, in case of average economy, and in case of good economy. Let's do the same for leveraged firm. Again, here we have the same probability, same EBIT, but the difference here is this company is carrying a debt of $10,000. Remember, जो हमने पीछे देखा था, तो $10,000 का डेट है, लोन है, उस पर 12% इंटरेस्ट है. तो 12% of 10,000 is 1,200. So this is their interest expense. So EBIT minus interest will give us EBT. 2,000 minus 1,200 is 800. On EBT we have to pay 40% tax. So 800 का 40% 320 आ गया, and if we deduct tax from EBT we get net income. So we have calculated net income under three situations, considering the economy to be good, where the economy will be average, and for if the economy is good, bad, average और good, तीनों के लिए हमने net income calculate कर लिया. Okay, now move on to the next slide.
Based on these calculations, we can calculate different ratios. So we are calculating three ratios: basic earning power, return on equity, and times interest earned. So basic earning power is your operating income divided by total assets. ठीक है जी. तो operating income minus operating income divided by your total assets. तो फर्म यू के लिए हमने बेसिक अर्निंग पावर कैलकुलेट कर ली 10%, 15% एंड 20% इन केस ऑफ बैड, एवरेज एंड गुड इकोनॉमी. अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी हमने कैलकुलेट कर लिया, विच इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी. नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी कैलकुलेट कर लिया. टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जीरो है, इसलिए ये इन्फिनिटी में आ जाएगा. फर्म लीवरेज फर्म के लिए हमने सेम चीजें, तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली. बेसिक अर्निंग पावर फॉर तीनों सिचुएशंस के अंदर, ठीक है. रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट कर लिया तीनों सिचुएशंस के अंदर, और फिर टाइम्स इंटरेस्ट अर्न भी कैलकुलेट कर लिया. तो ये हमने तीन रेशियोज कैलकुलेट किए हैं फॉर बोथ द फर्म्स: बेसिक अर्निंग पावर, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड टाइम्स इंटरेस्ट अर्न. अच्छा जी, व्हाट दीज रेशियोज इंडिकेट? वी वांट टू कंपेयर रिस्क विद द रिटर्न. ठीक है, बोथ द फर्म्स. तो फॉर कंपेयरिंग रिटर्न, व्हाट वी आर कंसिडरिंग, ये तीन हमने उसके लिए रेशियोज कैलकुलेट की थी टू get an idea of the return of this investment. तो बेसिक अर्निंग पावर तो दोनों फर्म्स की सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. However, the return on equity for unlevered firm is 9%, whereas for leveraged firm it is 10.8%. So this indicates that when the company borrowed there, or because of the debt, the return on equity of the firm went up. Obviously, times interest earned doesn't matter for from you. In that case there is no times interest earned, whereas in case of firm L it is 2.5 times. These are the average values. Okay, ये अब आप देखें होंगे वैल्यूज कौन सी ली हमने. तो ये जो लास्ट स्लाइड में अगर आप देखें, ये जो एवरेज वाली हमने वैल्यूज ली हैं वो हम उस पर बात करेंगे, एवरेज इकोनॉमी के केस के अंदर क्या हो रहा है. अच्छा, तो एक डिफरेंस है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी. तो रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा, जो हमारा पॉइंट था और जो हमने इन द बिगिनिंग आवर assumption वाज कि इन केस ऑफ डेट द रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजेस. तो वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि डेट की वजह से आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गई. अब हम रिस्क को देखते हैं. तो रिस्क के लिए हम दो, वी आर टेकिंग टू values to consider the risk. One is standard deviation of return on equity. Standard deviation of return on equity for firm U is 2.12, whereas for firm L it is 4.24. The firm with a higher standard deviation in return on equity is high risk firm compared to the firm with low standard deviation in return on equity. The second criteria that we are using is coefficient of variance. ठीक है, हमने coefficient of variance calculate कर लिया of return on equity. So coefficient of variance for return on equity is 24% in case of firm U, and it is 39% in case of firm L. Okay, so for risk, we can say the firm which has higher standard deviation in equity is a high risk firm. तो चूंकि फर्म एल का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आरओई इज हायर, तो हम ये कहेंगे कि फर्म एल इज riskier compared to firm U. Similarly, the firm with a higher coefficient of variance carries more risk. तो यहाँ पे हम देखें कि coefficient of variance of firm L is higher compared to firm U. तो firm L is, from both the criteria, it is indicated that the firm is carrying higher risk. तो वो जो हमारा शुरू का assumption था कि जी debt increases the risk as well as the return, वो यहाँ पे हमने देखा कि this example is clearly showing this कि because of the debt the firm L is carrying high risk, but at the same time their return is higher compared to firm U.
The effect of leverage on profitability and debt coverage. For leverage to raise expected return on equity must have basic earning power greater than return on debt, which is interest. अच्छा जी, ये आप देख लें कि ये जो हमने पीछे बात की कि because of the debt your return on equity is higher, that stands true if this situation is true, if this equation is true कि जी आपकी बेसिक till the time your basic earning power is greater than your cost of debt या इंटरेस्ट से ज्यादा है, यानी बेसिक अर्निंग पावर आपकी बेसिक अर्निंग पावर जो है यहाँ पे 15% है, डेट 12% है, ठीक है। तो 15% इज हायर कंपेयर टू द 12% डेट, इस वजह से ये कंडीशन मीट हो रही है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस डेट इज गोइंग टू इंक्रीज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज यहाँ पे उसकी जस्टिफिकेशन है या उसकी आप रीजनिंग देख लें कि व्हाई इट इज सो। बिकॉज इफ योर कॉस्ट ऑफ डेट या रिटर्न ऑन डेट इज ग्रेटर देन बेसिक अर्निंग पावर, then the interest expense will be higher than the operating income produced by debt financed assets, so leverage will depress income. अगर ऐसा नहीं है, यानी ये तो हमने कहा कि अगर बेसिक अर्निंग पावर आपकी कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है, फिर तो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी हायर। लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा हो जाए बेसिक अर्निंग पावर से, तो कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा यानी आप इन एक्सपेंस ज्यादा इनकर कर रहे हैं और इनकम कम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंस आपका हायर है, इनकम आपकी कम है, तो फिर क्या होगा? एक्सपेंस ज्यादा और इनकम हायर है तो आपकी इनकम डिप्रेस हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर आपका क्या रिटर्न इक्विटी भी कम हो जाएगा। So as debt increases, time interest earned decreases because EBIT is unaffected by debt and interest expense increases. ठीक है, जैसे जैसे आपका डेट बढ़ता जाएगा, टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड कम होता चला जाएगा, इसलिए कि इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, आपका ईबीआईटी उधर ही है, ईबीआईटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ रहा, तो उससे नतीजा ये निकलेगा कि आपके टाइम्स इंटरेस्ट अर्न कम होती जाएगी। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू okay, let's do this last slide and then we will end for the today's lecture. Okay, rather let it go till slide 19. Okay, so effect of cost of debt at different debt ratios. ठीक है, अगर आप ये इस this is an example or you can say this is a chart which indicates that how if the amount of loan increases, how it is going to affect your uh, rating and your cost of debt. ठीक है, तो अब कंपनी ने $0 बोरो किए हैं तो everything is zero. If the company is borrowing 250 million, let's say, so its debt to asset ratio is 12.5%, whereas debt to equity is 14.3, and so 25% debt means ओके, दिस अमाउंट बोरो इज 250 और आपके टोटल एसेट्स जो है वो 2000 है, ठीक है। इस बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया। तो टोटल 250 आपके अमाउंट बोरो है, तो रिमेनिंग 1750 वो आपका एसेट होगा। तो डेट टू इक्विटी कितना हो जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय 1750, सॉरी एसेट्स तो 2000 है, तो डेट जो है वो आपका 250 है और एसेट 2000 है, तो उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन कर ली, डेट टू इक्विटी कैलकुलेट कर लिया। ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि जी आपकी इस वक्त बिकॉज द पोर्शन ऑफ द डेट इज लो कंपेयर टू द टोटल एसेट्स, तो आपकी बॉन्ड रेटिंग स्ट्रांग है, आपका कॉस्ट ऑफ एट दिस पॉइंट यू आर कैरिंग 8% कॉस्ट ऑफ डेट। अब अगर आप 1500 पे चले जाते हैं, यानी आप 25% डेट पे चले जाते हैं, तो फिर आपकी बॉन्ड रेटिंग डिक्रीज हो जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। आप 750 पे चले जाएं, विच मीन्स 37.5% आप डेट ले रहे हैं कंपेयर टू एज कंपेयर टू टोटल एसेट्स, बॉन्ड रेटिंग विल फॉल further to triple B category and the cost of debt will increase to 11.5%. अब अगर आप $1000 बोरो करते हैं विच इज 50% डेट, so bond rating is further decreased, ठीक है। लो कैटेगरी हो गई, ट्रिपल बी इज हायर, डबल बी इज लोअर, और आपकी जो
cost of debt that also increases. Why do the bond rating and cost of debt depend upon the amount of debt borrowed? जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा, उसकी वजह क्या है? As the firm borrows more money, the firm increases its financial risk, causing the firm's bond rating to decrease and its cost of debt to increase. जैसे जैसे फर्म का रिस्क बढ़ता जाएगा, उसकी बॉन्ड रेटिंग कम होती जाएगी, उसकी कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ती जाएगी. So here's the conclusion that basic earning power is unaffected by financial leverage. ठीक है, basic earning power पे तो इफेक्ट नहीं पड़ा था जो हमने पीछे देखा. From leverage firm has higher expected return on equity because why? Because its basic earning power was greater than cost of debt. Basic earning power was 15%, cost of debt was 12%. Leverage firm has much wider return equity and EPS swings. ठीक है, जो उसकी वेरिएशन है रिटर्न ऑन इक्विटी में और अर्निंग पर शेयर में वो बहुत ज्यादा है. Because of fixed interest charges, its higher expected return is accompanied by higher risk. तो ये हमने डेट के बारे में जो हमारी assumption थी वो यहाँ पे true हो रही है. Okay, with this we conclude for today. Just go over these slides once again, listen to them carefully, and if you have any queries, you can ask me using the LMS. Thank you very much. And with here, I'll beg leave from you people with this that stay home and take care of yourself, your families, and concentrate on your goals. May Allah help us all. Thank you very much.